वही हुआ। उस इंसान को तो मैंने इतना ही बोला, मैंने कहा देखो अब जो हो चुका सो हो चुका, अब तुम चिंता मत करो और अब बस यहाँ बेड में पड़े पड़े तुम ओम नमः शिवाय का जप करते रहो। आगे जो तुम्हारा, अब उसको उस समय तो ऐसी बात हम कह भी नहीं सकते हैं ना कि तुम्हारा अब कुछ हो नहीं सकता। अब तो हम यही उसको कह सकते हैं कि जितनी प्रार्थना कर ले उतना ही अच्छा है, बाकी जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ है, मनुष्य का प्रारब्ध है। मैं किसी के प्रारब्ध को तो नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन उसकी हालत को देख के, उसकी पत्नी की हालत को देख के यही लगता है कि कैसे एक इंसान न केवल अपनी जान खराब कर रहा है, अपने जीवन को खराब उसने किया, बल्कि अपने साथ अपनी पत्नी को उसने विधवा बनाया है, अपने उन 2 बच्चों को जिनका क्या दोष है, अब उनके सर से बाप का साया उठ जाएगा। और एक ऐसा बच्चा जिसके पिता ना हो या जिसके पिता दूर हैं किसी कारणवश से भी, तो उस बच्चे की जो तकलीफ है, कैसे पिता है जिन बच्चों को जन्म दिया है उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, बस अपना स्टाइल मार रहे हैं, स्कॉच पी लिया, शराब पी लिया, बियर पी लिया, सिगरेट पी लिया, ड्रग्स कर लिए। निकला क्या, थोड़ी देर के लिए आपको एक एक्साइटमेंट लगी, मजा आया, उसके बाद क्या, उसके बाद ये हुआ कि शरीर में रोग उत्पन्न हो गए। बड़ा मुश्किल है। हमारे आसपास जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, मैं आप लोगों की बात कर रही हूं, आपके आसपास सब लोग ऐसी ही बात करने वाले मिलेंगे। आपसे बात करेंगे तो किस विषय में करेंगे, या आप भी किसी से अभी बात करते हो तो आप किस सब्जेक्ट पे बात करते हो, या कपड़ों की बात करोगे, या फैशन की बात करोगे, या कौन सी नई कार या मोटर बाइक आया है मार्केट में उसको हम लें, या किसको मिली है या कब हम लेंगे, या मैं जब कॉलेज जाऊंगा तो मुझे ये वाली मोटर बाइक या ये वाली मेरे को कार मिलने वाली है। और जो 14 प्लस के, वैसे तो 12 प्लस पे ही आजकल शुरू हो गया है, जो 12 प्लस की उम्र के हो जाते हैं उनका एक इंटरेस्टिंग, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो है लड़के लड़कियों के बारे में बात करेंगे, लड़कियां लड़के के बारे में बात करेंगी। अब आपकी उम्र, आपके आसपास सब लोगों का माहौल, उनकी बातचीत, एंड रिजल्ट क्या है कि आपका टोटल फोकस इन्हीं चीज़ों पर रह जाता है। हाउ टू लुक फिजिकली गुड, बट व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ, व्हाट अबाउट योर इंटेलेक्चुअल हेल्थ। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, स्कूल की किताबें पढ़ना मुझे मालूम है आपको बड़ा मुश्किल लगता है, कई बार पढ़ते भी हो जैसे भी, क्योंकि कोर्स है, सिलेबस है, मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। बट डू यू विद योर ओन चॉइस रीड सम बुक्स? हाउ मेनी ऑफ यू go to the market, buy a book and read that book, a book which is not concerned to your syllabus? Not even 50%. Reading good books gives us a space to imagine, to understand things around us. Reading helps us to understand. Reading helps us to empathize with all those people who gained too many things and who had worked very hard and became famous and became powerful. But what went on in their heart and mind, when we read such books, we come to know. And somehow this book reading helps us to understand that as the other person has wasted his life, we should not. Books can be your best friends. Books can help you a lot, teach you a lot. But again, the question is what kind of books you are going to read. It should be meaningful. It should be educative. It can be a novel, but let that novel to be meaningful novel. अभी इस विषय में मैं कुछ थोड़ी बात करती हूँ। अश्विनी अरोड़ा ने प्रश्न भेजा है। बैठो। I am a 12th pass out student aspiring to be aeronautical engineers. With your blessings and God's grace, I can realize my dream. And obviously then I'll be happy and contented, but suddenly my heart says, won't it take my wisdom away from me? Will I have time for myself?
Will I be able to attend satsang and visit the ashram? All these questions compel me to forget my dream and start looking for other career option in which I would have time for myself as well. I'm perplexed what to do. Please give me some guidance. Ashwini, being an aeronautical engineer, if this is your dream, then you should definitely pursue your dream. Do not discard your dream. Do not think of changing your career options. Regarding you say, won't it take away my wisdom? How can this take your wisdom away? It cannot. Wisdom is not that cheap that just by studying engineering, your all akal will go away somewhere, your all wisdom will go somewhere. It will always stay there with you. You say, would I get time to be here in ashram? See, whatever you wish for and what are your priorities, your all life begins to roll according to that. If your priority is to always be in contact with me, to learn these things and to practice these things, to get a chance to grow spiritually also, if you have a solid resolve about this, then please don't have any doubt, not even a single 0.5% about this thing will take you away. Nothing can take you away. If our resolve is definite, if we have made a powerful decision about ourselves that I wish to evolve, I wish to seek, I wish to become a seeker, I wish to meditate, I wish to practice my job, no one can stop you from doing that. And I know about various scientists. I am in contact with various engineers. And there are some of the people who are very busy in their work, but yet they are very diligently, they are practicing what they have learned from me. So it cannot take this thing away from you. Second question, I have read a novel which talks a lot about spirituality. The name of the novel is The Alchemist. It says every individual has a destiny predetermined by the Almighty, and there are omens which guide us towards that. Is it true? If yes, how to identify those omens? I would like to correct something over here. Our destiny is not predetermined by Almighty at all. Almighty is very busy in His own blissfulness and has no time to sort out what this puppet will do and what this human being will do. We are human beings, we have brains, we have the freedom to make choices. God is not making any choices for us. So, who is designing our destiny? We design our destiny. What you aspire for, what you think about, what your dreams are, your dreams, your hopes, your aspirations, your wishes, in together, these are the things which have shaped up your destiny. What you think today, your tomorrow gets affected. What you had thought yesterday, that has affected your this present moment. For example, just 15 days ago, when you were informed about this Shivis, your mind decided, your parents agreed, and see, in this present you are now here. 15 or 10 days ago, when you made decision that I wish to go to Guruma Ashram, that decision has brought you here. That wish has brought you here. Right? So whatever you will decide today, tomorrow will happen according to that. No one else is deciding what will happen in your life. It is actually you. The whole responsibility is on you. If something bad is occurring today in your life, again, it is because of something wrong which you had done at certain times. See, unintentionally, if you poke your eye with your own finger, accident do happen, right? You had no intention to hurt yourself, but you were sitting and somehow you have poked your fingers in your eye and then you feel pain. Similarly,
unknowingly you do some actions which are just going to poke in your heart and mind, as a result of which you feel pain, you feel misery, you feel sadness. रोटी खाते खाते में आपने चाहा नहीं था, पर रोटी चबाते चबाते आपसे खुद से ही जीभ कट गई, आपसे ही आपकी गाल कट गई, अब दर्द हो रही है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो? अपनी इस मूर्खता के ऊपर आप झल्ला सकते हो, खींच सकते हो या हंस सकते हो, लेकिन आप अपने पड़ोसी के थप्पड़ तो नहीं मार दोगे ना, मेरी जीभ कटी है तो तू रिस्पॉन्सिबल है। आपकी जीभ कटी है, आपकी गलती की वजह से कटी है। कई दफे हम चाहते नहीं हैं कि हम बुरा कर्म करें, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आप ही कारण होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फिल्म देखी, फिल्म में आपने देखा कि हीरो बात बात पे सामने वाले के सिर के पीछे थप्पड़ मार देता है। फिल्म देख रहे हैं आप, उन्हें थप्पड़ मार देता है। 3 घंटे में उसने 51 बार थप्पड़ मार दिए होंगे, जो भी उसके आसपास आता है, अब थप्पड़ मार देता है, थप्पड़ मार। अब आपने देखा देखा देखा, अब क्या है, अनकॉन्शियसली आपने इस चीज़ को उठा लिया। आप सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं, घर जाने के लिए आप अपने मम्मी पापा के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे ही कार में या टैक्सी में या बस में बैठने लगे, और आपने अपने साथ जो है उसके भी चल वही चले। अब ये थप्पड़ कहाँ से आया? आपने सोचा नहीं है कि जो ये कर रहा है वो मैं भी करूं, पर फिर भी जो आपने देखा वो आपने उठा लिया। It's a very dangerous thing. Our mind can be very evil. Very evil. आपने देखा कि किसी ने मोटरसाइकिल को इतनी स्पीड से चलाया और फिर अचानक अगला पहिया उठा करके पिछले पहिए पर गोल घुमा दिया। आपने ये एक्शन टीवी में या मूवी में देखा। अब उसको देखते ही अब आप अपनी मोटर बाइक पे बैठे, अब अंदर से आपके मन ने वो पिक्चर आपके लिए खड़ी कर दी कि तू भी कर सकता है, ये करके तो देख। तो आपने भी रेस दी और कोशिश करी कि चक्के को पहिए को आगे से उठा दें, और कोशिश करने के चक्कर में बैलेंस बिगड़ा, गिरे, टांग तोड़ ली, फ्रैक्चर कर लिया। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि पिक्चर ने आपकी पैर तोड़ा है, आपने तोड़ा है। आपने सोचा थोड़ी था कि मैं अपना पैर खुद तोड़ूं, पर फिर भी ऐसा काम आपने कर दिया। उसके पीछे मन की जो बहुत बड़ी कमजोरी है कि आपका मन जो कुछ देखता है उसका इंप्रेशन बना लेता है। जैसे कैमरा, डिजिटल कैमरा में आप फोटो क्लिक करते जाइए तो उसकी हार्ड डिस्क में सब चीज़ें स्टोर होती जाती। या मान लीजिए जैसे यहाँ भी मेरे सामने कैमरा लगा है, इसमें आजकल हार्ड डिस्क वाले कैमरा आ गए, उसमें टेप नहीं जाती, हार्ड डिस्क को अगर लगे वाले कैमरे को हमने ऑन कर दिया तो कैमरा तो रिकॉर्ड करते ही जाएगा ना। आप पता है, आपको नहीं पता है, आप उल्टी सीधी कोई हरकत कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, कैमरा तो इम्पार्शली उस सब को रिकॉर्ड कर लेगा, और जब भी उसको आप प्ले करेंगे वो सब कुछ दिखा देगा। हमारा मन भी इसी तरह है। हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उसका असर हमारे ऊपर आता है, और अनजाने में, ना चाहते हुए पर भी हम वो सब काम भी कर जाते हैं जो हमने देखा है। अब उसमें आपके कॉन्शियस थिंकिंग काम नहीं करती। इफ योर माइंड इज ऑलवेज लॉस्ट, इफ यू आर ऑलवेज लॉस्ट and you are seeing so many things, you are hearing so many things, and every seen and heard thing is going to put an impression on your unconscious mind, on your subconscious mind, and then one day suddenly you begin to behave according to those things. You begin to emulate what you have seen. You begin to copy that unknowingly. So mind can be very dangerous. It can really put you in lot of troubles. But this mind can also be our best friend. It can be our best dependable friend. But for that we need to train our mind. So if you have not trained your mind, then you can be in a troublesome situation. तो एक बात तो ये बहुत जोर से तुमको समझनी है
परमात्मा ने आपकी ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा उसने तय नहीं किया है। जो कुछ हमने पूर्व जन्मों में, पूर्व के काल में सोचा है, विचारा है, वह बस वही सब इच्छाएं आज हमारी इस जिंदगी को प्रभावित करती है। तो आज जो कुछ हम सोचेंगे उसका प्रभाव हमारे कल आने वाले समय पे पड़ेगा। अब इसमें एक बहुत पावरफुल चीज़ निकल रही है, और वो ये है, आप जो होना चाहते हो उसके बारे में आज अपनी विजन में, अपनी कल्पना में, अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को वैसा देखो।